हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वर्षा धीमान एंड आई वेलकम यू ऑल एट ऑलिव बोर्ड। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, वो ये है कि इफ़को ने एजीटी की वैकेंसीज आउट कर दी है। यस, आपने सही सुना कि इफ़को से एजीटी की वैकेंसीज आउट हो गई है। सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट आर रिलेटेड विद इफ़को एजीटी vacancies. Okay, so let's start our discussion. Before proceeding forward, you should know about what is the educational qualification needed to apply for agriculture graduate trainee, and what would be the stipend that you will get after qualifying as AGT in IFCO. So let's start all these important points discussion in detail about IFCO AGT. So online applications are invited from the individuals for the post of AGT Agriculture Graduate Trainee for its existing establishments, joint ventures and future projects anywhere in India or abroad. अब इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए? You should have 4-year BSc Agriculture full time regular degree. For general and OBC candidates should have secured a minimum aggregate of 60% marks, and SC/ST candidates should have secured a minimum of 55% marks in BSc Agriculture degree, and those candidates who have CGPA score in BSc Agriculture degree should convert it into percentage while filling the application form. तो आपका अगर स्कोर CGPA में है तो आप पहले उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, एंड इफ यू आर लाइंग इन द क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो इसके लिए लिखा हुआ है, देन यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एजीटी. एंड कैंडिडेट हु हैव पास्ड बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री in the year 2022 thereafter can only apply. ठीक है, वही है जो अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट है above qualification should be from the UGC recognized universities or institutions. और आप लोगों के पास 4 year की फुल टाइम रेगुलर डिग्री अगर है, देन यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इफको एजीटी. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके एज लिमिट क्या है. व्हाट इज द एज लिमिट for the aspirants who want to apply? So 30 years as on 1st of March 2025. ठीक है, 1st of March 2025 तक आपकी एज 30 years लाइक रिलैक्स, तो अपर एज लिमिट 30 years है. ठीक है, और 2022 that आपका graduation होना चाहिए. And if we talk about the relaxation, so by 5 years for SC/STs and by 3 years for OBC not belonging to creamy layer, to NCL non creamy layer का. And locations like where you will be आप AG3 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग कहाँ पर अपॉइंट होंगे आफ्टर क्वालिफाइंग दिस एग्जाम. तो फॉर फील्ड ऑफिसर्स लोकेटेड ऑल ओवर इंडिया. सो हाउएवर नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज फॉर द कंसर्न स्टेट इज अ मस्ट. तो जिस पर्टिकुलर स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं, you should have the regional language knowledge of the state. Notwithstanding the selection and placement of AGT for training, the selected candidates on absorption can be posted in any of the states, projects, establishments of IFCO in India. Right? Now, the knowledge of language. Candidate must be well versed with reading, writing, and speaking knowledge of the regional language of the state for which application is made. Knowing one or more than one language will have an added advantage, and knowledge of Hindi is desirable. So if you know Hindi, that is desirable, and from which particular state you are applying, you should have the knowledge of the regional language, like you will be capable of reading it, writing it, and speaking it. And ट्रेनिंग पीरियड कितना रहेगा? सो देयर विल बी अ ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 1 year. एंड व्हाट, लेट्स टॉक अबाउट द कंपेंसेशन. सो एज पर द रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटली द स्टिफिन इज रुपीज 33,300 रुपीज पर मंथ, एंड ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 year's ट्रेनिंग, और अगर आप 1 साल की कंप्लीट ट्रेनिंग को सक्सेसफुली कर लेते हैं, subject to requirement of IFCO, the AGT may be absorbed at the basic pay of rupees 37,000 per month in the regular pay scale of rupees 37,000 to 70,000, and the allowances benefits as per rules of the organization.
तो इतनी तो आपको सैलरी मिलेगी ही, उसके अलावा द अदर allowances or benefits you will also get as per the rules of the organization, right? Now if we talk about the service bond, so on appointment, the trainee belonging to creamy general OBC category would be required to furnish a service bond of rupees 80,000, and in case of SC/ST rupees 20,000 for serving for a minimum period of 3 years after successful completion of training. तो बॉन्ड विल बी देयर, ठीक है, आपने सक्सेसफुली ट्रेनिंग किया है तो उसके बाद 3 साल तक तो आपको इफको में एज AGT सर्व करना ही है. Okay, it's mandatory. And what would be the selection procedure? Eligible candidates will be required to appear for preliminary computer-based online test in open environment by using their own resources, computer, laptop with internet facility. यानी कि phase 1 और जो first prelim exam होगा that you will have to do at your home. ठीक है, आप अपने खुद के resources से first जो phase और prelim exam है that you will give. And the candidates shortlisted based on the performance in the preliminary online test will be called for final online test in the controlled environment at the designated center at Ahmedabad, Bangalore, Delhi, Kolkata, चेन्नई, लखनऊ, नागपुर, गुवाहाटी, पटना, रायपुर, सूरत, वाराणसी, चंडीगढ़, देहरादून, पुणे, हैदराबाद, विजयवाड़ा, कोचीन, जोधपुर, जम्मू, शिमला, भोपाल एंड जबलपुर. तो इन सभी सेंटर्स में जो भी आप मेंशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको सेकेंड मेंस एग्जाम के लिए अपीयर होना होगा, राइट? इन केस ऑफ सेंटर बेस्ड टेस्ट, candidates are required to opt any 2 test centers in order of their preferences out of the aforementioned centers. Effort will be made to allot the test center in order of choice given by the candidate. ठीक है, जिस ऑर्डर में आप अपने चॉइसेस फिल कर रहे हैं तो फर्स्ट एफर्ट तो यही करेगा इफको कि उसी के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट सेंटर मिल जाए. सो फॉर दिस what is a main mandatory thing कि आप टाइमली अप्लाई कर दें. So request for change in the test center once opted will not be entertained. And IFCO, just give me a second. Yeah. And IFCO reserve the rights to cancel any of these centers in and that eventually the candidates will have to appear in the center as decided by the management, and the candidates who will be are shortlisted on the basis of their performances in final online test will be called for personal interview. ठीक है, so first stage will be the prelims, second stage will be the mains, और mains के बाद there will be a personal interview. ठीक है, and after that there will be a medical examination. Candidates shortlisted after personal interview will be medically examined as per IFCO's medical standards before final selection. और इंटरव्यू के बाद देर विल बी अ मेडिकल एग्जामिनेशन बिकॉज आपको रूरल एरियाज में वर्क करना है तो दैट इज मैंडेटरी, एंड देन यू विल बी फाइनली selected. General, the nature of the duties and the responsibilities of the incumbents in IFCO involve extensive touring in rural areas. So only such candidate having aptitude and willingness to work in the field should apply. And how to apply? Interested and eligible candidates should apply online in the prescribed application form available through the link given below by 15th of March 2025. Any application sent through any other mode will not be entertained. तो ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक अवेलेबल हो जाएगा. यू नीड टू अप्लाई थ्रू दिस ऑफिशियल वेबसाइट लिंक ओनली, एंड लास्ट डेट टू अप्लाई इज 15th of March 2025. So aspirants, if you are thinking of targeting for IFCO AGT examination, please apply before 15th of March 2025. And if you have any query regarding the preparations, regarding the applying process, you can drop a comment in the comment box. I'll make sure I'll clear all your related queries. Thank you so much and all the very best.